Ladies and gentlemen, welcome to GameKheyl. I'm Naveed, and today we have ourselves someone for the first time from the Valorant community. We have ourselves Asad AKA Gunner. Sir, how are we doing today? I'm good. Thanks for having me. बाकी आप बताएं कैसे हैं नवीद भाई? Alhamdulillah, bilkul theek thak. And just to reiterate, a big shout out to Salt Esports, again, Daniel Mansoor, for connecting us with Asad. Like I mentioned, Asad is from the Valorant community, and we have not had any guests from there. So, again, we are very excited to have Asad. And also, talking about Valorant, this man has achieved a lot of different things because he's not just been a player of Valorant. He has been involved with esports, first-person shooters, such as CS:GO and CS 1.6. So this man has accomplished a lot of different things. So just to reiterate a few, this he has won DU Gamers. He has been a finalist of DU Gamers Arena in 2018 in CS:GO. Then he became a winner for the Zawi Extreme Pakistan qualifiers and ended up playing in Dubai. Again, probably the biggest accomplishment that he has had so far. He has been involved with different organizations that we are going to talk about moving forward in this interview. And also, he has won 6 of the 7 Valorant Jazba Cup Pro Invitationals, which is a huge accomplishment. So again, we have someone who has done it all, seen it all, and today we are going to hear from the horse's mouth what he is all about. So before we jump into this interview, a quick few updates from GameKheyl themselves. Ladies and gentlemen, we have got it ourselves a gaming laptop finally. We have ourselves an HP Victus. So this means moving forward, we will be doing a lot of esports, a lot of tournaments, and a lot of exciting things that will be coming up that I have to keep under wraps. So if you want to keep yourselves up to date, just follow our Twitter and keep yourselves known. And speaking of getting ourselves to know things, Asad, we have to know the origins. We have to know the genesis of Gunner. How did you get into esports? How did you get into CS:GO and then into Valorant? So just a brief about yourself and how the journey is and how's it going so far. First of all, thanks for the lovely introduction. So CS:GO से पहले 1.6 समर वेकेशंस थे. मेरे भाई ने मतलब मुझे सजेस्ट किया कि बहुत बोर हो रहे हो तो गेम खेल लो. फिर फास्ट फॉरवर्ड 1.6 से कब मैं मतलब दोस्तों के साथ खेलते खेलते ऑनलाइन चला गया, फिर उसके बाद CS:GO में आ गया. मतलब टाइम पता ही नहीं चला. फिर उन्हीं दोस्तों के साथ मैंने CS:GO में स्विच किया था. फिर जब CS:GO में स्विच किया तो शुरू में हम ऐसी थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करते थे. फिर कुछ टीममेट्स मिले, टीम बनाई, लोकल सीन में कम्पीट किया. फिर बाद में पता चला यार यहाँ पे तो मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उनसे सीखा. फिर उसके बाद एक टीम फॉर्म की थी 2018 में ही अंडर द नेम ऑफ मार्कोर. फिर उस टीम के साथ हमने काफ़ी मेहनत की और ड्यू गेमर्स अरीना के फाइनलिस्ट बने. एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होपफुली पूरा इवेंट जीत जाए, लेकिन दूसरे प्लेयर्स जो लोकल प्लेयर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम आके कुछ ऑलरेडी नोन टीम्स को हरा दें. तो फाइनल में थोड़ा चोक कर गए, फाइनल हार गए, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है कहते हैं, तो नो प्रॉब्लम. फिर उसके बाद एक ईयर बाद फिर दोबारा हम 2019 के ड्यू गेमर्स अरीना में आए. उस वक्त हम थोड़ा मतलब ऑलरेडी लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट परफॉर्मेंस के बाद हम एज अ टीम सॉलिड हो गए थे. थोड़ा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इस बार पूरा इवेंट भी जीत सकते हैं, बट अगेन वी डिसअपॉइंटेड आवर फ्रेंड्स एंड आल्सो आवरसेल्व्स. लेकिन उसके एक ही मंथ बाद क्वालिफायर आया जोवी एक्सट्रीम लैंड का, जिसमें हम सब डाउन थे क्योंकि ऑलरेडी टूर्नामेंट हारे हुए थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे परफॉर्मेंस जीतेंगे. लेकिन उसमें फिर हम लोग ने ड्यू गेमर्स अरीना के 2019 के विनर्स को सेमीफाइनल में 2-0 हराया. And then we played the final against Portal Esports Red, our like organizational rival, because we were known as Portal Esports Blue. We were both under the organization of Portal, both the teams. So फिर फाइनल में हमने उनको 2-1 हराया, and then we went on to play in Dubai, unfortunately with a stand-in because एक प्लेयर का हमारे वीजा नहीं लग पाया था. And in a FPS game or in a team game, मतलब if one player goes down, the whole like पूरी छत नीचे गिर जाएगी. तो वही वाला हिसाब था कि एक भी टीममेट ना आता तो फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाए. फिर उसके बाद वैलोरेंट आई 2000 आई थिंक 20 में आई थी वैलोरेंट. या बीटा उन्होंने वर्जन लॉन्च किया था, वो ट्रायल कर रहे थे, अपना गेम ट्रायल कर रहे थे, बग्स वगैरह एंड सब. तो हम ऐसे कैजुअली वैलोरेंट खेलते थे, कुछ ऐसा सच प्लान नहीं था वैलोरेंट में स्विच होने का. लेकिन जब हमने देखा कि वैलोरेंट जिस तरह आपने गेम को प्रमोट कर रहा था हमारे रीजन में, स्पेशली ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन हमारे रीजन में जो CS:GO का सीन था वो बहुत ऑलरेडी डेड था. मतलब कोई इतने इवेंट्स नहीं होते, साल में एक डीजे हो गया ड्यू गेमर्स अरीना,
या ज़ोवी का क्वालिफायर आएगा, ये सीन था। इसके अलावा कोई ऐसा हमारे लिए इवेंट्स नहीं होते थे, और रायट जो वैलोरेंट का क्रिएटर था, डेवलपर, वो ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें करता है रीजन में। तो ऑब्वियसली अब आप एक चीज़ में इतना टाइम लगाते हो तो आप उससे एक्सपेक्ट भी करते हो कि आपको कुछ रीपे मिले। तो सीएसगो में वो चीज़ नहीं हो रही थी। वैलोरेंट में बहुत सारे टूर्नामेंट्स आ रहे थे। रायट खुद स्पॉन्सर करके टूर्नामेंट्स कराता, तो सबसे मेन रीज़न वैलोरेंट में स्विच करने का यही था, मेनली हर पाकिस्तानी टीम का और साउथ एशियन टीम का। अच्छा, सो असद, लाइक यू मेंशन्ड, आपने डिफरेंट ऑर्ग्स के साथ आप एसोसिएटेड रहे, आपने डिफरेंट टूर्नामेंट्स में compete किया, बट आई थिंक द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि आपने फ्रॉम अ गेम दैट इज CSGO, एक लेगेसी गेम है, बहुत लोग अरसे से खेलते आ रहे हैं, CS की इनफैक्ट 1.6 का जैसे आपने बताया, एंड फ्रॉम दैट टू स्विचिंग टू वैलोरेंट कंप्लीटली, क्या रीजन थे? बिकॉज दिस इज अ नैरेटिव दैट वी हियर क्वाइट अ बिट के लोग जो थे CSGO से काफी फ्रीक्वेंटली वैलोरेंट की तरफ आए, क्योंकि I know it's a tactical first-person shooter, but why did a lot of people switch? And what were your reasons for switching? एज़ आई प्रीवियसली मेंशन्ड, मेनली रीज़न यही था कि सीएसगो के इवेंट्स हमारे रीजन में इतने होते नहीं थे, और जो होते थे, जैसे हम साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आते हैं, Hmm. जो इवेंट्स हमारे होते भी थे वो मेनली हमें पिंग डिसएडवांटेज होती थी। एक गेमर जो भी इंटरव्यू देख रहा होगा वो समझ सकता है कि पिंग डिसएडवांटेज क्या होती है। लाइक सीएसगो के जो क्वालिफायर्स होते थे वो हम 100 पिंग में खेल रहे होते थे, और जो हमारे ओपोनेंट्स होते थे मोस्टली सिंगापुरियन टीम्स या मलेशियन टीम, तो 20 या 5 पिंग में खेल रही होती थी। Mhm. तो वो मेनली डिसएडवांटेज था। सेकेंडली, वो भी सिर्फ साल में ही मतलब 1-2 क्वालिफायर्स आते थे। एज़ सच कोई इतने बड़े टूर्नामेंट्स नहीं आते थे जहाँ पे हमें एक्सपोज़र मिले, Hmm. जहाँ पे हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले। तो मेनली रीज़न यही था, क्योंकि जब आप एक चीज़ को इतना टाइम देते हो तो एक वक़्त आता है कि आप अब एक्सपेक्ट करने लगते हो कि यार इतना टाइम मैं इस चीज़ को दे रहा हूँ तो कुछ कुछ रीपे तो मिले मुझे। तो मैं Hmm. इसको इसी को मतलब कंटिन्यू कर सकूँ चीज़ को। तो मेन रीज़न यही था सीएसगो का छोड़ने का कि इवेंट्स नहीं थे, और वैलोरेंट जब लॉन्च हुआ तो वैलोरेंट के डेवलपर्स राइट ने बहुत अच्छे से मतलब मार्केटिंग की थी इसकी, और मेनली इवेंट्स वो लोग खुद अपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड इवेंट्स कराए थे, जिसकी वजह से सारे मतलब पाकिस्तान स्पेशली, नॉट इवन साउथ एशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया ने मतलब वैलोरेंट पे स्विच कर दिया था। अभी बहुत कम प्लेयर्स हैं सीएसगो के अब इस रीजन में। So yeah, I think you've summed it up pretty well. के what were the primary reasons? क्योंकि again, जी। I think this is something जो कि काफी सारे games को लेके हम struggle करते हैं. I am basically a player of UFC for myself, और मेरी 200 के करीब पिंग आ रही होती है, which is incredibly difficult to play, क्योंकि आपके हाय। पास या international players हैं 20, 25, 18 की पिंग पे खेल रहे होते हैं. तो for those who don't understand the concept of ping, basically आप जो भी गेम के अंदर आपका एक्शन होता है वो एक डिलेड उसका रिस्पॉन्स जाता है. सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं 200 ms की बात करूं, दैट्स 200 माइक्रो सेकेंड्स, एंड फॉर माय ओपोनेंट उसको शायद 18 मिली सेकेंड्स लगते हैं, और एज कम्पेयर टू माई 200 मिली सेकेंड्स. तो ऑटोमेटिकली माई ओपोनेंट इज एट एन एडवांटेज, एंड इन अ शूटिंग गेम जहाँ पे यू हैव टू हैव द फर्स्ट ट्रिगर, तो वहां पे इट हैज लिटरल लाइफ एंड डेथ कॉन्सिक्वेंसेज इन द गेम. तो ट्रू। आई अंडरस्टैंड कि एक मेजर फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, एंड अगेन दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द फैक्ट के गेम के अपने सर्वर्स किन रीजन्स के अंदर मौजूद हैं, और उन सर्वर्स का डिस्टेंस आपसे कितना दूर है. तो इंटरेस्टिंगली इनफ, इफ आई एम प्लेइंग समवन इन दुबई, तो मेरा और उसका जो डिफरेंस आता है डिले का, वो सबसे ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू मी प्लेइंग समवन इन यूरोप. तो समझ से बाहर है ये चीज. मैं पाकिस्तान में भी किसी के साथ खेल रहा होता हूँ तो उसमें भी यही मसला होता है. बट जस्ट टू क्लियर दिस आउट, ऐसा क्या है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई गेम्स लाइक पबजी, फ्री फायर वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज these companies are investing a lot of their time and efforts into the regions. So like you mentioned, Valorant के ads YouTube के ऊपर बहुत frequently देखने को मिल रहे थे, which I don't think किसी और गेम की इस तरह से हो रहे थे. So I think Valorant has done an excellent job, और एक बड़ा अच्छा उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया. Now we have heard a few things about your journey, and like you mentioned, and I think this is something that we were discussing earlier as well. So you've been involved with a lot of different orgs, and right now you're involved with Salt Esports. तो कैन यू जस्ट गिव अस अ ब्रीफ के आपने किस तरह से सॉल्ट स्पोर्ट्स के साथ अपने आप को एसोसिएट किया? आई थिंक यू जॉइंड देम रिसेंटली. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक, एंड व्हाट वाज द जर्नी दैट लेड यू टू जॉइनिंग सॉल्ट स्पोर्ट्स? So directly Salt Esports, or should I mention the previous organizations, और किस तरह Basically से मेरी जर्नी? from you being a part of those orgs to now how you got into salt sports. Okay. So before Salt Esports, I used to play mainly in Exploit. um, 2 months की जर्नी थी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट की, बट जो हमारा रोस्टर था 5 मैन रोस्टर, वो हम
जब से वैलोरेंट रिलीज हुआ था मे बी 8-9 मंथ्स हम साथ स्टिक करे हुए थे। तो एक्सप्लॉइट के बाद आई हैड टू लीव एक्सप्लॉइट ड्यू टू सम म्यूचुअल agreement among the teammates कि I should not be playing with them anymore, so understandable, I just we parted ways। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, तो मैंने गेमिंग क्विट कर दी थी कुछ टाइम के लिए, और मैं मतलब जॉब कर रहा था अपनी। फिर one day Darky, my current teammate, he messaged me on Facebook to like GXR आ रहा था। GXR was a major event, like the biggest event in Pakistan history। तो he messaged me कि यार GXR आ रहा है, क्या सीन है, खेलना है। मैंने कहा यार मैं तो 4 मंथ से खेला ही नहीं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल आउट ऑफ शेप हूँ, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हूँ, कुछ भी नहीं है। उसने कहा कोई मसला नहीं, बस आ जाओ खेल लो, ट्रायल कर लेते हैं ये वो सीन। तो खेला मैंने, तो मजा आया साथ खेलने में, उनको भी मजा आया, और हम कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत जाएंगे। बट सो जीएक्सआर में अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट इन द सेमीफाइनल टू क्लैरिटी स्पोर्ट्स। मतलब ये नहीं कहूँगा कि वो हमने खुद गेम हारे, हमने खुद गेम दिया था, हम खुद हारे थे ड्यू टू लाइक इनएक्सपीरियंस। थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस था टीम में, लेकिन वो ज़ाहिर एक्सपीरियंस स्लोली स्लोली खेलने के साथ ही आता है, और मेनली हमने न्यू टीम फॉर्म की थी, तो बस इसी वजह से डिसअपॉइंटमेंट बड़ी हुई थी, क्योंकि जीएक्सआर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था और मुझे पार्टिसिपेट करना था। ऑब्वियसली लैन मतलब मैं कोई भी लैन ऐसा नहीं हुआ जो मैं ना खेला हूँ पाकिस्तान में, तो इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। बट ठीक है, खैर हो गया सो हो गया। फिर उसके बाद मतलब यही जर्नी थी सॉल्ट स्पोर्ट्स में। उसके बाद वीसीसी क्वालिफायर आया था। वीसीसी क्वालिफायर में वी वेंट ऑन टिल द फाइनल्स, और हम एक्सपर्ट से आए थे, माय टीममेट्स। फिर उसके बाद वीसीसी का जो फाइनल हारता है ना, सेकंड प्लेस जो आता है, उसको एक और वाइल्ड कार्ड क्वालिफायर होता है वीसीसी का, उस पे इनवाइट आती है। तो उसकी भी स्टोरी बड़ी अजीब सी थी कि हम मतलब समझे सेमीफाइनल में थे, और उसमें से 2 टीम्स ने जाना था। मतलब जो सेमीफाइनल में जीत गया, एक तो ऑलरेडी चली गई थी दूसरे ब्रैकेट से, और एक हम थे। और हमने लाइक 1-1 चल रहा था, एक मैप हम जीते थे, एक मैप अपोनेंट टीम जीती थी, और हम 9-3 के हाफ से हम चोक कर गए। 9-3 लाइक वैलोरेंट में अगर आपको पता हो तो 13 राउंड्स जीतने के लिए चाहिए होते हैं, तो हमारे 9 राउंड्स ऑलरेडी हम मतलब जीत चुके थे, और सामने वाले 3 राउंड जीते। तो 9-3 के हाफ से हम चोक करके 13-11 हार गए वो गेम। तो फिर वो भी काफी एक अजीब सा मतलब एक्सपीरियंस था, लेकिन स्टिल टीम यंग है, और टाइम के साथ ही चीजें सही होती हैं। तो आई एम स्टिल होपफुल कि अगर हम साथ स्टिक करेंगे तो काफी आगे जाके अचीव कर सकते हैं कुछ। ठीक है। सो लाइक यू मेंशन फॉर एनी गेमर इन फैक्ट ऑब्वियसली हर किसी का गोल होता है टू विन द टूर्नामेंट्स, बट अगेन आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कम्पिटिटिव सीन के अंदर देयर कैन ओनली बी वन विनर। सो लोगों के अंदर थोड़ी सी इस चीज को लेके बेसब्री होती है कि यार फॉरन फॉरन हर चीज होगी, बट व्हाट दे हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज अ ग्राइंड इन्वॉल्व। आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और कभी कभी आपको कुछ झटके भी खाने पड़ते हैं। तो आई बिलीव you're right at the precipice or at the surface कि आपने बस it's just the right combination of things coming together and you coming out on top. So best wishes to you and to the team, and inshallah I think with the effort that you're putting in and with the efforts that I heard that Salt Esports is putting in, so inshallah the future looks very very bright for the team. इंशाल्लाह। Coming towards understanding the Valorant scene again, क्योंकि आपने बताया कि ये game 2020 में इसका beta आया, and then now this game is becoming very fastly becoming one of the biggest first person shooters in the world. तो how in fact अगर आप बात करें पाकिस्तानी सीन की इन वैलोरेंट, सो हाउ डू यू सी इट कि कम्युनिटी कैसी है, ग्रो कर रही है, ग्रो हो सकती है? हाउ आपके ख्याल में अभी किस स्टेज के ऊपर हमारी जो कम्युनिटी है वो खड़ी है? अभी तो हमारी कम्युनिटी, हमारा वैलोरेंट सीन एक इन्फेंट स्टेज पे है, काफी यंग है। हमें देखिए किसी भी सीन को ग्रो करने के लिए ना उसका प्लेयर बेस ज्यादा होना चाहिए। तो अभी भी हमारे कंट्री में, रीजन भी नहीं, स्पेशली कंट्री में हमारे टैलेंट की बहुत कमी है एज कम्पेयर टू अगर आप इंडिया देखें। इंडिया लाइक इन सीएस गो, इंडिया एंड पाकिस्तान वर समवट इवन, और लाइक पीपल यूज्ड टू से दैट पाकिस्तान रीजन वाज a little bit better than India। लेकिन उसके बाद जब वैलोरेंट में ट्रांजिशन की, तो वहाँ पे एक उनके लिए फायदा ये हुआ था कि जो पबजी मोबाइल थी उस वक्त इंडिया में बैन हो गई थी, तो जितने भी स्पॉन्सर्स थे ना वो वैलोरेंट में आ गए थे। तो और जो मेनली पबजी के बिग स्ट्रीमर्स थे, बड़े नोन प्लेयर्स थे, वो भी वैलोरेंट में आ गए थे। तो इस वजह से प्लेयर बेस बड़ा, वहाँ बड़ा, स्पॉन्सर्स आए। तो अब जाहिर है अगर आप एक चीज से अर्न कर रहे हो तो आप उसको फुल टाइम देते हो, 8 आवर्स जॉब पूरी बना देते हो। सही तो बात। इंडिया का मेनली, इंडिया और हमारे रीजन में कंपैरिजन का फर्क ये है कि इंडिया इसको एज अ जॉब लेते हैं और हम अभी भी इसको एज अ हॉबी लेते हैं, इसलिए हमारा रीजन पाकिस्तान पीछे है। अगर हमें इस सीन को ग्रो करना है तो हमें और प्लेयर बेस चाहिए होगी, और प्लेयर बेस तभी आएगी जब वो उनको कोई इंसेंटिव दिखेगा इसमें।
कुछ प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट लॉस का सीन होता है सारा, अगर उनको कुछ फायदा दिखेगा तो बंदे आते हैं खेलने। एज अ स्टार्ट तो सब मतलब एज अ हॉबी करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक प्रो लेवल पे आते हो तो आपको कुछ रिटर्न दिखता है तो ही आप उसको परस्यू करते हो। तो मेनली रीजन ये है कि हमें और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इस पास आएंगे जब ज्यादा ज्यादा टूर्नामेंट्स होंगे, सारा टूर्नामेंट्स होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे तो वो आएंगे। Agreed. जब आपका सीन competitive होता है, when you feel like के you can learn and grow and have some success again, जैसे कि आपने बोला कि यार right now जो आपका प्राइस पूल होता है वो सिर्फ विनर्स के पास ही जाता है, so it's not like के unless you're on someone's payroll कि आपके अच्छे खासे पैसे जमा हो रहे हैं. And again in Pakistani scene there are not enough tournaments like you mentioned. So again, I think for everyone who's watching this, if you have the capacity, if you want to have growth in it, we have some amazing talent in Pakistan when it comes to Valorant. So hopefully, anyone who is watching this and has the means, inshallah, maybe you're someone who can host a tournament and who can create some sort of an ecosystem for Pakistan esports. And again, this is something that we're trying to do here at GameKheyl. Abhi hum sab interviews le sakte hain, to hum interviews le rahe hain. Inshallah, again, let's see how far and how big we can grow this in. Now, having trying to understand the इंटरनेशनल सीन, आपने जैसे बताया कि बहुत सारे डिफरेंट टूर्नामेंट्स होते हैं. इनफैक्ट आई थिंक सॉल्ट स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द टीम्स जिसने बीसीसी में के लिए क्वालिफाई किया या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसमें compete किया. तो there are a lot of things that happen in the scene, or I think in order to grow a local scene you need personalities, you need individuals. अब मैं Valorant की अक्सर स्ट्रीम्स देख रहा होता हूँ तो मुझे देख के ये समझ में आता है कि मे बी जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है इसको कुछ हद तक शायद ग्रूमिंग की जरूरत है. एंड व्हाट आई मीन इज कि हमारे पास स्ट्रीमर्स हैं, तो व्हेन स्पॉन्सर्स आर वाचिंग दैट कंटेंट तो मे बी जबान जिस तरह की इस्तेमाल हो रही होती है या जिस तरह का अपना डिमीनर होता है उसको लेके जो है कुछ स्पॉन्सर्स कनेक्ट कर भी जाते हैं. बट अगेन नॉट एवरीवन हैज द कंटेंट, लेट्स से कोट एंड कोट डकी भाई की तरह का कंटेंट हो या उस तरह. सो बेसिकली नॉट एवरीवन बाइज इनटू दैट नैरेटिव एंड मे बी इन द गेमिंग दैट मे नॉट बी द केस. तो आपके ख्याल में अभी इसको ग्रो करने के लिए क्या हमारी जो पर्सनालिटीज हैं क्या इनको चेंज होने की जरूरत है, थोड़ा मेच्योरिटी की जरूरत है, या फिर आपके ख्याल में ज्यादा कंटेंट होगा तो स्पॉन्सर्स बोलेंगे यार हमें नहीं फर्क पड़ता बंदा गाली दे रहा है नहीं दे रहा, इसको लोग देख रहे हैं तो हम तो आएंगे इसके पास. तो व्हाट डू यू थिंक कैन बी द वे के वैलोरेंट का जो टैलेंट है इसके लिए उसके ऊपर ज्यादा आई बॉल्स आए या इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो? व्हाट डू यू थिंक वुड बी अ बेटर अप्रोच? देखिए, जहाँ तक कंटेंट और लैंग्वेज की बात है, जिस तरह आप बता रहे थे कि हम लोग अक्सर 18 प्लस लैंग्वेज पे चले आते हैं, इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो स्पॉन्सर्स ना मतलब उसको स्पॉन्सर ना करना चाहें उसको. तो अब बेसिक सीन ये है कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई ऑफिशियली इंटेल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी तो है नहीं जिनको सिर्फ गेमर्स को टारगेट करना हो. अगर हमारे पास स्पॉन्सर्स आएंगे भी तो वो या तो मतलब हमारे लोकल जो चेन्स हैं, मतलब जैसे ऐसे कोई भी ब्रांड लोकल ब्रांड हो तो वो उस तरीके स्पॉन्सर हैं जो एक फैमिली एनवायरनमेंट, मतलब जो एक जिनकी टारगेट ऑडियंस फैमिली होती है. तो जाहिर है अगर हमें हमें कोई देखेगा तो हमें कौन देख रहा है, हमें देख रहे हैं यार अंडर 18 बॉयज, या फिर जो मतलब जो 18 वल्गर कंटेंट थोड़ा चाहते हो. तो थोड़ा सा जाहिर है हमें ग्रूम करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, एक प्रेजेंटेबल वे में अपनी स्ट्रीम्स अपने आप को रखना पड़ेगा, तभी तो स्पॉन्सर्स आएंगे. और सेकेंडली अगर सीन को ग्रो करने में एज पहले मैंने कहा था कि कुछ इनिशिएटिव दिखेगा किसी प्लेयर को तो वही खेलने आएगा. अब सीन ग्रो किस तरह होगा कि यार अगर ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, अब ऑर्गेनाइजेशंस का काम है प्लेयर से कंटेंट निकलवाना. प्लेयर का काम क्या है भाई, प्लेयर अगर आप उसको बोलोगे खेलो, वो आप नहीं भी बोलोगे तो भी वो खेल रहा होगा, क्योंकि काम के साथ ही उसकी हॉबी भी है, और हॉबी अगर काम बन जाता है तो बंदा खेल ही रहा होता है, मतलब वो जी जान लगा देता है. तो अगर आप अब ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि वो प्लेयर से कंटेंट निकलवाए. प्लेयर भाई बैठा हुआ है, आप उसको कंटेंट निकलवाओ, वो आप जो बोलोगे वो करेगा, आप निकलवाओ, वो आपका काम है. फिर ऑर्गेनाइजेशन का काम है स्पॉन्सर्स को टारगेट करना. तो एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी चेन बननी मतलब जरूरत है पाकिस्तानी रीजन को, जिसके थ्रू स्पॉन्सर टारगेट किए जाए, कंटेंट निकलवाया जाए, प्रोफेशनल गेम्स में जहाँ पे मतलब हम compete करते हैं वहाँ पे शो उसकी रेटिंग, उसकी व्यूअरशिप शो कराई जाए. तो इस तरह ही आई थिंक सीन ग्रो कर सकता है. Some very thoughtful words there, and I think हमारे पास जो content creators हैं, especially in the Valorant community, I think
दे हैव टू रियलाइज कि ऑडियंस किस चीज को देख रही होती है, बिकॉज अगेन इफ यू हैव एन ऑडियंस 17-18 साल के बच्चों की, तो वो ग्रेविटेट करती है टुवर्ड्स बैंटर, टुवर्ड्स फन, एंड आई थिंक सॉल्टी स्पोर्ट्स, नमक छिड़कों का हैशटैग is something that हाँ is along the lines of banter. However, ठीक। there is a fine line between banter and abuse. So as long as you don't cross that line, हंसी मजाक हर किसी को मजा आता है. But if you don't cross that line, तो I believe you make yourselves very marketable. तो if you have that marketability, तो I think यहाँ पे आपके पास ब्रांड्स के पास कोई रीजन नहीं है अपने आप को इन्वॉल्व करने की. एंड आई बिलीव इनफैक्ट आज ही मैं रेडियो पे कोका कोला का एक एड सुन रहा था. सो आई थिंक कोका कोला इन तरह के ऑर्ग्स जो हैं अब अपने आप को बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस अब अपने आप को ई स्पोर्ट्स के साथ अलाइन करना शुरू कर चुके हैं. तो इफ यू वांट योरसेल्व्स टू बी आइडेंटिफाइड बाय दीज मल्टीनेशनल बिग ब्रांड्स, तो you have to be in a position जहाँ पे they would want to approach and get to you. As long as you have that kind of marketability and have those eyeballs, तो बड़ा जरूरी होता है. And speaking of eyeballs, I mean, at GameKheyl we have this hobby that we do, and that is to use or guess as a platform जिसके थ्रू वो और लोगों को recognize कर सकें. So I believe जब से आप Valorant और CS:GO के अंदर हो, there must be a lot of individuals जिनके साथ जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, जिन्होंने आपको गेमिंग में हेल्प की होगी. एंड ऑल्सो देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स जिनको आप शाउट आउट्स देना चाहते होगे. आप चाहते होगे कि यार इनको भी पजेराई मिले, इनकी भी प्रमोशन हो. सो एवरीवन दैट यू थिंक यू डिजर्व्स अ शाउट आउट फ्रॉम यू, फ्रॉम गनर. तो नाउ इज द टाइम, द माइक इज ऑल योर्स. सो बेसिकली कुछ इंडिविजुअल्स थे जो आई थिंक अगर वो कंटिन्यू करें तो मतलब गेमिंग के पाथ में, वैलोरेंट में कंटिन्यू करें तो वो आगे जाके कुछ कर सकते हैं सीन में. मेनली डीमन, मेरा करंट टीममेट जो है वो 18 इयर्स का है. एक प्लेयर है ब्लडी जिसको मैंने प्रीवियसली कोच किया था, वो 17 इयर्स का है. तो इन प्लेयर्स के पास टाइम भी है, इनकी एज अभी इतनी यंग है कि जब तक ये मतलब 20 या 21 के भी होंगे, होपफुली ये सीन और ग्रो कर चुका होगा. तो अगर ये गेमिंग को आगे परस्यू करें तो आई थिंक ये they can make a career out of it. And also Javix, he's also one of my teammates, and he's like I think he's also 18. So the young players who are currently playing or not even competing, if they continue to just grind the game as side by side with their studies, I think they can make a career out of it. So सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मेरी यही एडवाइस है कि लाइक गेमिंग वर्ल्ड में आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गया, आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप गेमिंग के मतलब उस पर कंटिन्यू करें तो आप अच्छा खासा इससे अर्न भी कर सकते हैं. और एक पूरा मतलब जॉब जॉब बंदा पाकिस्तान में जॉब करता है, उससे ज्यादा आप गेमिंग करके आप कुछ कर लोगे जिंदगी में. सॉरी, माय माइक वाज म्यूटेड. नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि इफ there is an incentive for gamers, and I really like the fact that you recognize young gamers who have the potential and the will. So I think with Pakistan and in fact the whole world gravitating towards esports, and like you mentioned, it's a multi-billion-dollar industry. So if everyone has that kind of mindset and trajectory, so inshallah I think there is no reason why Pakistani market cannot grow as exponentially as all the other markets are. And again, best wishes to everyone involved in gaming and in esports. Again, an organization like Salt Esports deserves a big shout out for getting themselves involved, at least at this point in time. And not just Salt Esports, but very different orgs in Pakistan who are putting in the grind, who are making sure that that esports in Pakistan gets the recognition that it deserves. Right now, मेरे ख्याल से ज़्यादा incentive नहीं है. In fact, there was a tweet a few days ago from one of the CEOs of the org के भाई मैं 25 लाख रुपए डुबा चुका हूँ अपने इसमें वगैरह वगैरह. तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू रिक्वायर मोर एफर्ट एंड मोर विलिंगनेस देन दैट, बट कुछ कर नहीं आई एम सकते सॉरी, उसमें. आपने बात छेड़ी है तो मैं इस पे यही कहता हूँ कि देखिए वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ना गेमिंग की, आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना तो कोई भी बिजनेस आपको डायरेक्ट आउटकम नहीं देगा. अग्रीड. एक आपको ब्लीडिंग स्टेट से गुजरना पड़ता है. अब जाहिर है ये एक यंग मार्केट है, आपने जो किया भाई कम्युनिटी के लिए अच्छा किया, लेकिन एक यंग मार्केट है, आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपका अप्रोच सही होना चाहिए. अगर आपका अप्रोच गलत है तो आपके 25 के आपके करोड़ करोड़ रुपए भी चले जाएंगे. ट्रू. तो बट स्टिल जिसने गेमिंग को सपोर्ट किया उनका थैंक यू, बट जितने वर्ल्ड वाइड भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज में नहीं आई. मेनली बिग नेम्स लाइक फेस, गिल्ड, ई स्पोर्ट्स, वो अभी तक लॉस में चल रही हैं. फेस तो आई थिंक उनका तो मतलब वो तो अपने कंटेंट से इतना रिटर्न निकाल लेते हैं कि वो मतलब उसका उनका सीन ऑन हो जाता है. बाकी जितनी भी मेनली मतलब फेमस ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत से अभी तक लॉसेस में चल रहे हैं. तो अभी भी थोड़ा सा और टाइम है गेमिंग इंडस्ट्री को, बट
बस यहीं पे रैप कर लेते चलें, ज़्यादा फिर पर्सनल बातें नहीं करते। मेरी खैर हो गई। अगर कोई बात वैसे भी होती है तो अगेन गेम खेल इज द प्लेटफॉर्म दैट यू कैन टॉक टू। बाकी अगेन आई थिंक पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एज वेल, बट आई थिंक we would tend to focus on the brighter side of things. We would like to see the glass as half full. टैलेंट भी आपके पास मौजूद है, स्पॉन्सर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुके हैं। अगेन ऑर्गेनाइजेशंस की नेक नियति हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आगे जाके ज्यादा है सामने। So again, best wishes to everyone involved in esports in Pakistan. So Asad, we are coming towards the end of this interview. Again, आपके लिए again for any gamer in fact, आप सब अपने लिए goals and कुछ milestones set करते हैं कि यार maybe a few years down the line, this is what I want to achieve, this is what I want to do. So for everyone who's watching this interview, if you have any goals that you would like to share with us, अपने लिए आपने कोई aspirations या goals अगर set किए हो? मैंने अपनी एस्पिरेशन सेट की हुई हो यार, बस मेरा मेन गोल यही था कि मैं जब तक स्टडी कर रहा हूँ, मैं गेमिंग को जितना टाइम मतलब स्टडी के साथ-साथ मुझे कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है एज़ सच। तो मैं बस यही चाह रहा था कि मैं गेमिंग में ऑलरेडी इतना टाइम दे चुका हूँ, तो मैं थोड़ा-सा और परस्यू कर लूँ इसको। तो आई थिंक जब तक मेरी स्टडी चल रही है, अगर तो कुछ हो गया सीन में, तो फिर आई विल कंटिन्यू, वरना बैकअप पे मैंने ये सोचा था कि साथ-साथ मैं इतना टाइम दिया है, कुछ एक्सपीरियंस है, तो उससे थोड़ा कोचिंग की तरफ जाऊँ, प्लेयर कोचिंग की तरफ। So I'm trying to go that path, but still it's a bit hard in this season currently. So let's see what future holds for us. चलें, again I think wherever the future takes you, we will wish you all the best. We really hope कि esports turns out to be quote unquote rosy roti for you. तो हमारी best wishes हैं. And also like you mentioned with coaching, I believe coaching का scope right now in Pakistan, again when the necessity comes, when the demand comes के लोग चाहेंगे इसको pursue करना, तो I think coaches की demand भी उस हिसाब से बढ़ेगी. So again, whatever your endeavors are, best of luck and best for your future for that. Also, again, a big shout out to Salt Esports, Daniel Mansoor, who helped us contact one another. This is again the quickest interview that we've been able to get put together actually. And yeah, again, a big shout out to all the guests that we've had previously. GameKheyl again is now moving towards the next stage of its growth. So it's going to be an amazing ride. If you're a fan of combat esports, there is a lot of things coming up as well. If you're a fan of content that is fun, maybe हम लोगों ने आगे एक दो concepts और introduce कराने की कोशिश की है, and we're in the process of trialing them. Game Gupshup के नाम से. So hopefully that is also something जो कि अब actively हम उसको चला रहे होंगे. So if you're a fan of GameKheyl and what we do, there is a lot of great things coming up. And also if you're here for the first time, अगर आप असद के पीछे पीछे हमारे पास यहाँ पर आए हैं, तो again GameKheyl पे we are trying our best to give coverage to all the top level esports athletes in Pakistan. Whether you're an athlete, you're an org, or whether you're even a game streamer, so this platform is available to you. So feel free to contact us. All our details will be in the description, and also the details of our lovely guest here today. इनकी भी सारी description के अंदर हमारी सारी details होंगी. So make sure to follow him on all of his contacts. Give him some love, and also if possible, अच्छा लगे ना, अच्छा अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं ये बोलना बहुत जरूरी होता है हाँ भी अच्छा बिकॉज लगा तो भी लाइक चैनल सब्सक्राइब यार, सपोर्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी। एब्सोल्युटली, आई मीन आप में से आप जैसे गेमर्स हैं, आप जैसे ही इंडिविजुअल्स हैं, इन लोगों की सपोर्ट हमारे साथ रहेगी तो इंशाल्लाह द फ्यूचर इज ब्राइट. विद गेम खेल और प्लान्स आर सेट इन मोशन. हमारी कोशिश रहेगी कि हम जिस लेवल तक लोगों को सपोर्ट कर सके हम करेंगे. हम पहले इंटरव्यूज तक लिमिटेड थे, एंड माशाल्लाह से लाइक आई मेंशन्ड वी गॉट इन आवरसेल्व्स अ सिस्टम. तो अब हम चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, एंड इंशाल्लाह step by step we are going to grow this even further. So again, thank you all for joining us. Asad, it was an absolute pleasure having you here, getting to hear your story, your struggles, your accomplishments. And inshallah, the next time we speak with one another, we will be talking or even celebrating some big accomplishments in the future. So इंशाल्लाह। again, it was a pleasure having you here. Any final thoughts if you would like to share with us? एनी फाइनल सब बस जस्ट यही कहना है कि गेमिंग को परस्यू करो, यंग बॉयज जितने भी गेम खेल रहे हैं वो थोड़ा सा परस्यू कर लेंगे, साइड बाय साइड अपनी स्टडीज पे भी फोकस करें, क्योंकि यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप। और बस यही है कि अब पाकिस्तानी देसी पेरेंट्स को भी ये दिखाना है कि गेमिंग भी एक करियर बन सकता है। तो बस गेमिंग को परस्यू करो, जितना खेल सकते हो खेलो, जितना पढ़ाई का टाइम दे सकते हो पढ़ाई को भी दो, दोनों को साथ बैलेंस करो।
I think this is a lovely bit of advice कि when you have that balance, when you prioritize things the right way, तो एक कोई और चीज neglect होती नहीं है. Fortunately or unfortunately in Pakistan right now, gaming हमारी मैं तो खुद इतना इसमें involved हूँ. आप जैसे लोगों की कोशिश है कि it esports becomes a proper profession and for all the young up and coming talent जैसे आपने बताया आपकी org में 18-19 साल के बच्चे मौजूद हैं. So if these are the people who get to really benefit from pursuing this as a career, तो क्या ही बात हो, because our generation has struggled quite a bit to convince our parents कि यार खेलोगे कूदोगे खोगे खराब नहीं हो सकता ना, आप गेम खेल के ही बन जाए हम लोग. तो गेम खेल का नाम रखने की भी एक वजह यही थी कि we want people to be passionate and exercise this as a career. So we'll try our best to do this, and again, Asad, people like you, people like Salt Esports are doing their best to accomplish that as well. So I think हम लोगों ने काफी बात बोल चुके हैं इस subject के ऊपर. Again, thank you all for joining us. Inshallah, we'll see you again with another guest real soon in coming weeks. अब हमारी कोशिश है कि हम weekly content post करते रहें. So again, again, it is an absolute pleasure hosting all of you as well, everyone who's watching this. For the final time, this is Naveed and Asad, AKA Gunner, signing out. Hope to see you guys again real soon. Allah Hafiz. Goodbye, guys. Goodbye.